preposition of versus for। preposition of हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज की मलकियत को जाहिर करें यानी पोजीशन को, इसके अलावा उसकी ओरिजिन को यानी किसी चीज की इब्तदा या ताल्लुक बनाने के लिए, मटेरियल और कंटेंट के लिए कोई मवाद वगैरह, एसोसिएशन या रिलेशनशिप के लिए यानी किसी चीज की आपस में बाहमी ताल्लुक को जाहिर करने के लिए, इसके अलावा कॉज और इमोशन या जज्बात या एहसास को जाहिर करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, जो कि क्वालिटी को शो करता है या करेक्टरिस्टिक को। अ कप ऑफ टी कंटेंट या मटेरियल को शो करता है। ही इज द फादर ऑफ द ब्राइड रिलेशनशिप को शो करता है। शी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग जिसमें इमोशन को जाहिर किया गया है। सम कॉमन यूजेस है इसके जैसे कि अ पीस ऑफ केक यानी कि अ पार्ट ऑफ अ होल, पोजीशन एट द हाउस ऑफ माय ड्रीम्स, कॉज और इमोशन अफ्रेड ऑफ द डार्क। कॉमन फ्रेजल वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें ऑफ यूज हुआ है। फ्रेजल वर्ड क्या है वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फर्स्ट वन है थिंक ऑफ, जिसका मतलब है टू हैव एन आइडिया और कंसिडर। एग्जाम्पल है आई थॉट ऑफ अ ग्रेट प्लान। उसके बाद है ड्रीम ऑफ, टू इमेजिन और डिजायर। एग्जाम्पल है ही ड्रीम्स ऑफ सक्सेस। हेयर ऑफ, टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। सेंटेंस है हैव यू हर्ड ऑफ दैट सिंगर। उसके बाद है रिमाइंड ऑफ, जिसका मतलब है टू मेक समवन रिमेंबर। एग्जाम्पल है दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड। उसके बाद है जेलस ऑफ, unhappy because someone else has something you want. Sentence है he felt jealous of his friend's new car. उसके बाद है dispose of, जिसका मतलब है to get rid of something. Sentence है the criminal tried to dispose of the weapon. लास्ट में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद है preposition for. फोर हम लोग उस वक्त यूज करेंगे जब किसी चीज की पर्पस के बारे में यानी वजह, उसकी बेनिफिट, फायदे, ड्यूरेशन, उसकी दौरानिया या रिसिपिएंट को जाहिर करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि दिस लेटर इज फॉर यू रिसिपिएंट को जाहिर कर रहा है कि किसके लिए है। आई बॉट फ्लावर्स फॉर माई मदर, बेनिफिट या गिफ्ट को जाहिर करता है। ही वर्क्स फॉर अ बैंक, एम्प्लॉयमेंट या एसोसिएशन को जाहिर करना है। वी वेटेड फॉर एन आवर, टाइम या ड्यूरेशन को जाहिर करता है। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, फंक्शन या ड्यूटी को जाहिर करता है। इसके कुछ कॉमन यूजेस है जैसे कि पर्पस के लिए अ टूल फॉर कटिंग, वजह को जाहिर करना है कि टूल किस चीज के लिए है। उसके बाद है सपोर्ट, ही वेटेड फॉर द कैंडिडेट। ड्यूरेशन, आई लिव देयर फॉर अ ईयर। कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसमें फॉर यूज हुआ है जैसे कि आस्क फॉर, इसका मतलब है रिक्वेस्ट समथिंग। सेंटेंस है शी आस्क्ड फॉर हेल्प। उसके बाद है लुक फॉर, सर्च फॉर समथिंग। एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉर माई फोन। अप्लाई फॉर, मीनिंग है रिक्वेस्ट ऑफिशियली। एग्जाम्पल है ही अप्लाइड फॉर द जॉब। नेक्स्ट है वेट फॉर, स्टे until something happens. We waited for the train. Responsible for, the cause of something. She is responsible for managing the team. Famous for, well known because of something. Sentence है Paris is famous for the Eiffel Tower. Sorry for, feeling regret. I am sorry for being late. Suitable for, right for something or someone. This dress is suitable for the party. Eager for, very excited about something. She is eager for the holiday to start. आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। She is afraid dash spiders. Of आएगा या for. They are eager dash the concert next month. Her smile reminds me dash my mother. I am aware dash the problem. We are sorry dash the inconvenience caused.